Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute, Navgam. I am with chapter number. First chapter is about the fundamental unit of life, the cell. In this chapter today, my topic is structure and function of nucleus. Nucleus, it is 10th class biology. In this chapter now, my discussion is about structure and function of nucleus. Nucleus is an important, I say that very important organelle in a cell. Without a nucleus, there could be no cellular activities inside the cell. कोई भी activity cell के अंदर नहीं हो सकता है without the nucleus. Nucleus को कहा जाता है बॉस ऑफ द सेल. जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन में, एक कंपनी में हेड होता है, बॉस होता है, जितनी भी एक्टिविटीज वहां होते हैं इंस्टीट्यूशंस में, that comes under the supervision and the direction of the boss. In the same way, the nucleus is the boss of the cell, and all the directions, all the activities are controlled and maintained by the nucleus. Nucleus is present in all kind of the cell, that is in the plant cell as well as in the animal cell. It represents itself an important cell organelle. And when we remove out the nucleus of the cell, अगर cell के बाहर nucleus को निकाला जाएगा, then the protoplasm, I mean the cytoplasm of the cell will dried up and it will become dead. That means all the biomolecular synthesis, all the important hormones, enzymes, or synthesis and formation takes place inside the cell, and the maintenance of other organelles take place, and some organelles like ribosome itself synthesis within the nucleus, and there are the transfer RNA, आगे आप पढ़ोगे mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA. These are itself synthesized within the nucleus. That means nucleus is an important cell organelle. Let us discuss the structure about the nucleus. What the nucleus is of, what is its composition, what is its structure, and what functions it perform inside the cell. As I draw lovely diagram of the nucleus, it is a nucleus, representation of nucleus, and here this is the double membrane of nucleus. This is known as the nuclear membrane. It is of double membrane. First part में मैंने दिखाया double membrane. ये double membrane, it is, that means nuclear membrane जो होता है, sometimes it is known as nucleus envelope. It is of double layer. It is of double membrane. And second is, within the double layer, within the nuclear envelope, there is a space that is known as a perinuclear space. ये perinuclear space nuclear के दो membranes में आ जाता है. That means if there is a two layers of nucleus, one and second layer, and between the two layers there is a space, and this space is known as the perinuclear space. Here this is the perinuclear space you can see within the nuclear membranes, that is of double membrane. याद रखिए object जो आ जाता है higher classes में, that nuclear membrane is of double membrane. One is the inner membrane which is close to the nucleoplasm, and other is the outer membrane which is to the cytoplasm of the cell, and between the two membranes there is perinuclear space. Now अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही बात कर देंगे, दिस आउटर मेम्ब्रेन जो ये है, इट इज एक्सटेंडेड इन ट्यूबुलर फॉर्म. आप देख रहे हैं ये जो मेम्ब्रेन है, एक तो यहां से आ रहा है, यहां से जा रहा है, और हाउ मच इट इज एक्सटेंडेड. यहां से देखिए हाउ इट इज एक्सटेंडेड. यहां देखिए इस मेम्ब्रेन, हाउ द एक्सटर्नल, ये जो लेयर है, ये लेयर जो है, ये एक्सटर्नल लेयर, हाउ इट इज एक्सटेंडेड, हियर it is extended, and this is the extension of the extranuclear membrane. याद रखिए, this is the extension of
this is here extension of external nuclear membrane, and there is attach of ribosome. ये देखो ribosomes are attached with this, and this tubular network, ये आप देख रहे हैं tubulus, these tubulus on their surfaces they have ribosomes attached with this tubulus. They are known as the RER. Go rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, that is the extension part of the nucleus. जो nuclear का outer membrane होता है, nuclear outermost membrane, वो extend हुआ है and gives the formation of tubules. And these tubules are in a short, and they are directly into the cytoplasm, or these tubules are डायरेक्टली टू द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन तक भी इनकी कंटिन्यूटी होती है या इन ट्यूबुलस की कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो आप देखिए ये जो स्पेस अब आ रहा है इन ट्यूबुलस में, इसको कहते हैं हम ल्यूमेन. दिस ल्यूमेन इज अ fluid space. Then here we can say this tubule, this network of tubule, it is the extension of nuclear membrane, outermost nuclear membrane. There gives the tubular like extension, and there is these tubules when on their surfaces, इनके सरफेस पे अगर पाया जाता है ribosomes attached to their surface, then it is known as these tubules rough endoplasmic reticulum, RER. तो आगे चलते हैं. हमने देखा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कंटिन्यू नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूड, एंड इट इज देयर इज द पोर्स, देयर इज द पोर्स here, and this is known as simply nuclear pore. Nuclear pore कहा जाता है इसको. There are the pores, and nuclear pores are important in the nucleus as there जो भी material within the nucleus, nucleoplasm में बनता है, molecule, biomolecule बनता है, या कोई enzyme बनता है, या कोई प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसको अंदर से न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल तक आना है. तो easily they will diffuse through these pores, can cross the pores, nuclear pores. That means nuclear membrane is a porous. That means there is the nuclear pores on the surface of the nucleus, so that there is the crossing, there is the exchange of material, cytoplasm to the nucleus, from the nucleus to the cytoplasm of the cell. And then of fifth, then is the sixth here, nuclear pore, fourth point, and fifth I told about, there is the tubular, there is a lumen, and it is a fluid lumen here. यहाँ दिखाता हूँ मैं रेड मार्क से, ये जो स्पेस आपको दिखाई देता है, it is the lumen here, it extends here, it extends, जिसको मैंने कलर किया यहाँ पे, यहाँ देखिए lumen, it is the fluid. हाँ, आगे देखेंगे हम सिक्स्थ पॉइंट में, there is a fluid here, there is a fluid within the nucleus. This is known as the nucleoplasma. Nucleoplasma, जिस तरह like protoplasma in the cell, it is a fluid, gel-like fluid. It's इसी तरह से matrix-like fluid, jelly-like fluid, gel-like fluid is found in the nucleus. That fluid is living in state, living in condition, and known as the nucleoplasm. Plasm means fluid, gel-like fluid, jelly-like fluid. That it is the nucleus, that it belongs to nucleus. Sometimes, as it is previous name was the karyoplasm भी कहा जाता है इसको. Then seventh, in the nucleus there is the solid mass like structures in the nucleoplasm here. They are 1 and 2 in number. In some nucleus this is single in number, and other nucleus of the cell they are 3 in number, multiple in number भी. कोई भी ऐसे सेल होती है जिसमें जो ये उसमें न्यूक्लियोलस होता है 3 से ज्यादा भी होते हैं. यहाँ पे मैंने 2 दिखाए. These are the two solid bodies. These are the two solid bodies in the nucleoplasm में पाया जाता है nucleolus. What are the nucleolus?
two solid bodies. They are made of proteins plus DNA. ये प्रोटीन्स एंड डीएनए के बने हुए होते हैं, एसेंशियल प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, जिनका नाम होता है, हम देंगे हिस्टोन्स. आगे आप हायर क्लास में पढ़ोगे हिस्टोन्स. प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स को खास तरह हिस्टोन्स, एंड देयर इज अ डीएनए रैपिड बाय डीएनए, एंड दिस गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ. तो ये जो टू सॉलिड बॉडीज है, इनको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस, एंड दे हेल्प अस इन द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए ऑफ द सेल. डीएनए सिंथेसिस इन्हीं से होते हैं. दे एंड समटाइम्स कहा जाता है जो न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियोलाई, हम कहेंगे न्यूक्लियोलस इसका सिंगुलर नेम है. अगर दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, तीन होंगे, तो न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियोलाई इज द प्लूरल टर्म फॉर इट. It is the plural term. That singular is the nucleolus. If there is a one nucleoli, अगर एक ही होगा, बस एक ही इसमें दो है तो न्यूक्लियोला है. तो देन न्यूक्लियोलस जो है, दे एसेंशियली आर मेंट, ये खास तौर राइबोसोम्स बनाते हैं. दे आर द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. खास तौर ये किसके लिए है, कहा जाता है कि जो राइबोसोम्स आगे, जब ये राइबोसोम्स यहाँ बनते हैं, फिर वो बन के बाहर निकलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर निकलते हैं राइबोसोम्स. आपको पता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. तो राइबोसोम्स और द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मगर इटसेल्फ राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, शाबाश, अगर इनसे प्रोटीन बनते हैं, ये खुद कहाँ से बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं विद द न्यूक्लियोलस. Nucleolus are meant for the ribosome synthesis. So then here thread-like, very thin thread-like structure that is untwisted in state. ये देखिए ब्लैक मार्कर से मैंने दिखाया यहाँ पे इस तरह का. This is known as the chromatin material. जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, when there is a nucleus division, इनमें एक पैटर्न आ जाता है, and they becomes condensed in state. जब when the nucleus start to divide in the interface stage, then हम देखते हैं वहां ये जो मटेरियल है, इनका एक अच्छा सा पैटर्न बन जाता है. they condense and become in distinct in future, and then they are named as chromosomes. क्रोमोसोम को इनमें एक अच्छा खासा पैटर्न आ जाता है. ये बिखरे हुए होते हैं, दागे जैसे होते हैं, तो ये बिखरे हुए होते हैं. जब भी न्यूक्लियस तैयारी करता है डिवीजन होने में, देयर इज अ न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान फिर इसका एक खास पैटर्न हो जाता है. आई विल शो इट हियर. एक खास पैटर्न हो जाता है इसमें, इस तरह का पैटर्न आ जाता है इसमें. तो इस चीज को नाम पड़ता है, जो इस तरह का पैटर्न इसमें आ जाता है, इसको नाम पड़ता है क्रोमोसोम. एंड द क्रोमोसोम हैज ए सेंटर दैट इज नोन एज ए सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम इज द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम. वो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये पहले क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे होते हैं, बिखरे हुए धागे होते हैं, तो इनमें एक अच्छा सा पैटर्न आ जाता है क्रोमोसोम्स. देन क्रोमोसोम्स, तब ये चीज क्रोमोसोम, तब इनसे क्रोमोसोम बनते हैं. ये एक इनका डिस्टिंक्ट पैटर्न आ जाता है इनमें, जब न्यूक्लियस क्या चला जाता है, न्यूक्लियस डिवीजन में चला, न्यूक्लियस अंडरगो द डिवीजन, देयर इज अ न्यूक्लियर डिवीजन. उस वक्त जो ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है, विच इज अनट्विस्टेड एंड सेपरेटिंग इन फॉर्म इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, इनमें एक पैटर्न आ जाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम में एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम. तो यहाँ पे एक इस तरह का ये क्रोमोसोम होंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, whatever there is inside. This is all about the structure of the nucleus. Now what the function nucleus perform, and as I already told that it is the boss of the cell. It controls the various important activities. It controls various activities inside the cell, and it keeps the cell alive. As per the function, primary job of the nucleus is that it contains the genetic material. It contains the genetic material.
as per the functions is concerned. Functions. It contains the genetic material. Later on, it is this genetic materials. There is the transmission of this genetic materials from generation to generation. When there is duplication of the cell, when the cell undergoes duplication, then the genetic material जो होता है इसमें बहुत सारे कॉपीज बनते हैं, फोटोस्टेट कॉपीज. तो वहां उसकी क्या होती है, आफ्टर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज, देयर ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस. वो न्यूक्लियस के अंदर एक हिडन मटेरियल होता है जो कोडेड इंफॉर्मेशन में रह जाता है. तो दूसरे जब भी सेल, एक नई सेल जो उसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स, जब डॉटर सेल्स वजूद में आते हैं, those daughter cells also contain that duplicate copies. It is possible, ये तब मुमकिन है जब हमारे न्यूक्लियस में एक जेनेटिक मटेरियल होता है. आगे इस सेल को किस तरह डिजाइन होना है, इस सेल क्या काम कर लेंगे, आगे इसका क्या काम होगा, इसके क्या फीचर्स डेवलप करने हैं, तो वो सारा जेनेटिक मटेरियल में छुपा हुआ होता है. देन when the parent cell starts to divide to make its own copies, photostate copies, then there is a formation of new daughter cells. Those new daughter cells also contain the duplicate copies of this important genetic material. That means nucleus contain important genetic material which contains the coded information. After it is replication and transmission into daughter cells में चला जाता है. replication हो गया duplication, जब इसकी duplicate copies हो जाते थे, इसकी जैसे कि हमारे original copies होते हैं, हम उसके फोटो कॉपी लेके स्टूडेंट उसको हम शेयर करते हैं. वी आर शेयरिंग द मटेरियल, स्टडी मटेरियल. इसी तरह से जो पेरेंट का जो ओरिजिनल कॉपी उसका फोटो कॉपीज होते हैं, वही फोटो कॉपीज जब ये सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, वो फिर छोटे छोटे वो डिवाइडिंग सेल जो होते हैं डॉटर सेल्स, उनमें वो फोटो कॉपीज रह जाती है. तो then there is the transmission of this genetic material from generation to generation. ये एक important, it is a prime job of the nucleus. And second job of the nucleus is that of, then आपने क्या सीखा function के तौर, that means it contains the genetic material या hereditary material. Then this transmission takes place from the parent cell to the daughter cells. Then there is the expression of जो genetic material में coding information होगी, इसके कौन से organelles बनाने, कौन से किस किस्म के प्रोटीन्स आगे बनाने, कैसी सेल को डेवलप करनी, वो सारा की सारा मटेरियल कोडेड इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल में होते हैं डीएनए एंड आरएनए तौर पे. तो वो जेनेटिक मटेरियल हम बात कर लेंगे डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड प्लस एसेंशियल प्रोटीन्स which are transfer proteins, replication proteins, various processing proteins are associated with it. Then later on I talk about this genetic material. Then there is the second one here. It is the first one, it contains genetic material. Essentially it is the function of, it is the storage of, ये भी एक काम है न्यूक्लियस का, it contains the genetic material and it stores it. Number second, then it is transmission takes place from the parent nucleus to the pronucleus, टू द या डिवाइडिंग न्यूक्लियस में चला जाता, उसकी ट्रांसमिशन डॉटर सेल में. तीसरा जॉब क्या है न्यूक्लियस का, इट मेंटेन्स all the activities of the cell. जो भी सेल को बनाना हो, प्रोटीन बनाना हो, कोई एंजाइम बनाना हो, कोई एसेंशियल प्रोटीन बनाना हो, वो न्यूक्लियस के अंडर द कंट्रोल बनता है, अंडर द न्यूक्लियस के डायरेक्शन के तौर वो एक्टिविटीज हो रही है. जो भी केमिकल रिएक्शन होती रहती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती है इनसाइड ऑफ द सेल, वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, वो सारा के सारा जो सेल के साइटोप्लाज्म में ज्यादातर काम होता रहता है, वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस आ जाता है. दैट मीन इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज दैट takes
place inside the cytoplasm of the cell within the nucleus itself. It controls itself, and all the biochemical process take place in the cytoplasm of the cell, also controlled and maintained by the nucleus. And outside of the cell also the कोई बायोमोलिक्यूल न्यूक्लियस में बनता है, फिर वो डायरेक्टली सेल के बाहर निकल के काम करता है। गो न्यूक्लियस का खाली कंट्रोल नहीं है, जो भी एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में होता है उस पे कंट्रोल करे, और जो एक्टिविटीज सेल के बाहर होते हैं उसको भी अंडर द कंट्रोल रेगुलेट उस काम को करता है। तो यहाँ किसी वक्त एक कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन बायोमोलिक्यूल न्यूक्लियस में बनता है, बिल्कुल वो डायरेक्टली सेल के बाहर चला जाता है, और सेल के बाहर उसको काम करना है। क्या काम करना है वो तो उसी बायोमोलिक्यूल को पता है कि मुझे सेल के बाहर कौन सा काम करना है, वो कौन सी एक्टिविटीज वहां सेल के बाहर मुझे फंक्शन करानी है। देन इट इज द गो न्यूक्लियस का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है विद इन द एवरी सेल। दैट मीन्स विदाउट द न्यूक्लियस सेल इज डेड, सेल इज नथिंग, एंड cell nucleus cell contain nucleus, it is important, maintains and regulates it is all the activities. And I hope you understand about the structure and function of the nucleus. बोर्ड पे भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको पूरा देखिए कि लेबल डायग्राम मैंने बनाई है। तो नंबर 8 पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किया है स्ट्रक्चर के तौर पे। नंबर 1 इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 2 जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस आती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। थर्ड जो होता है यहाँ ये ट्यूबुलर फॉर्म है, जो ट्यूब्यूल्स है, एंड कंटेन द अटैच्ड राइबोसोम्स, इट इज नोन एज द आरिया रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। नंबर 4 इज द न्यूक्लियर पोर। आप देख सकते हो यहाँ देयर इज अ पोरस, देयर इज अ पोर्स on the surface of the nuclear membrane, then it is known as nuclear pore. Then ये जो ट्यूब्यूलर आउटर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है वो एक्सटेंड होता है, एंड ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन होती है, या कभी कभार ये ट्यूब्यूल्स डायरेक्टली चला जाता है सेल मेम्ब्रेन तक, इसकी कंटिन्यूटी होती है। तो इसको इसके अंदर जो फ्लूइड स्पेस होती है उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। And then 6th is there is a gel-like matrix-like fluid within the nucleus that is known as the nucleoplasm. And ancient जो इसका previous नाम था, पुराना नाम कैरियोप्लाज्म भी कोई कुछ बुक लिखते हैं। Then there is a 2 solid masses, yeah, there is 1 single solid mass and 2 rounded solid masses, they are known as the nucleoli. 8th is there is that thin thread-like untwisted and scattering in form this material, this is known as the chromatin material. This is all about the structure of the nucleus and function. I already told you about this it, and I hope you understand about this concept, structure and function of nucleus, and very important in point of examination. I hope you understand about this. Thank you very much.